जय श्री माताजी। आज उपस्थित सभी सहयोगी भाई बहनों का शाम के ध्यान सत्र में प्रतिष्ठान पुणे से हार्दिक स्वागत है। We welcome all the brothers and sisters of the world to today evening's meditation from Pratishthan Pune. दोनों हथेलियों को गोदी में रखते हैं। श्री माताजी की सुंदर प्रतिमा अपने दिल में बसाते हुए परम चैतन्य की अनुभूति देते हैं। Let's experience the joy of Parama Chaitanya by keeping Shri Mataji's beautiful picture in our hearts. Jai Shri Mataji. श्री माताजी को प्रणाम करते हैं और सामूहिक बंधन लेते हैं। Let's have collective बंधन। श्री माताजी से ध्यान की अनुमति मांगते हैं। परम पूज्य श्री माताजी, कृपा कर आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की अनुमति आप हमें प्रदान कीजिएगा। Mother, by your divine grace and blessings, please grant us your divine permission to sit at your lotus feet for today evening's collective meditation. 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। Devi
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नाड़ी संतुलन करते हैं। अपना दायां हाथ पृथ्वी माता की ओर और बायां हाथ श्री माता जी की ओर करते हैं और प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिएगा। Mother, by your divine grace and blessings, may the ida nadi of the entire collectivity be completely cleansed and purified. दायां हाथ गोदी में और बायां हाथ आकाश तत्व की ओर करते हैं। Let's keep our right hand on the lap and left hand towards the sky element. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिएगा। Mother, by your divine grace and blessings, may the Pingala Nadi of the entire collectivity be completely cleansed and purified. अब बायां हाथ वापस गोदी में लेते हैं। Let's bring back our left hand to the lap. पूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे रखेंगे। Let's keep our full attention on the सुषुम्ना नाड़ी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिएगा। Mother, by your divine grace and blessings, may the Sushumna Nadi for the entire collectivity be completely cleansed and purified. अब हम हमारा पूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पे रखते हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। Let's keep our pure attention on our मूलाधारा। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हमारे अंदर गणेश जी के सारे तत्व भर दीजिएगा।
हमें अबोधिता, वात्सल्य और सुबुद्धि दीजिएगा श्री माताजी। Mother, may all the beautiful, innocent and intelligent qualities of Shri Ganesha be bestowed upon us. May we be completely obedient to our Holy Mother, that's you, Shri Mataji, such that we are able to deserve your blessings. अब हम अपना दायां हाथ बाएं हृदय पे रखेंगे. Let's keep our right hand on our left heart. श्री माताजी, हमारे हृदय को पूर्णतया स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बना दीजिएगा. इतना हृदय विशाल बना दीजिएगा कि इस हृदय में आपके चरण बैठ सके. Mother, please make our hearts magnanimous, full of generosity and pure love and compassion for the whole world, such that your holy lotus feet can fit in our heart. अब हम अपना दायां हाथ कपाल पे रखेंगे. Let's keep our right hand on the forehead. सर को झुकाते हुए, कपाल की दोनों बाजू को थोड़ा दबाते हुए प्रार्थना करते हैं. By bowing down our heads to Shri Mataji, let's pray. परम पूज्य श्री माताजी, हमने एक साथ सबको हृदय से क्षमा कर दिया है. Mother, we have forgiven everyone at once, and we surrender all the world's problems at your holy lotus feet. धीरे धीरे अपना दायां हाथ सहस्त्रार पर रखेंगे. Let's keep our right hand on the सहस्त्रारा. प्रार्थना करते हैं. परम पूज्य श्री माताजी, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ बनाइए. हमें निर्विकल्प बनाइए श्री माताजी. Mother, please establish
our self-realization and God realization within us, and give us doubtless awareness. दायां हाथ वापस गोदी में लेते हैं. Let's bring back our right hand to the lap. कुछ क्षण इसी स्थिति में ध्यान लगाते हैं. Let's be in this state of meditation for a while. इसी ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हुए हम अब श्री माताजी की अमृतवाणी ग्रहण करते हैं. आज की अमृतवाणी है बर्थडे पूजा टॉक, दिल्ली, 21st March 1996. Let's listen to Shri Mataji's Amritvani. Jai Shri Mataji. This must happen. Only they come to Sahaja, then they think it's a contract and they must get this and they must get that. All this kind of behavior is not that of a Sahaja. Sat yogi in Sanskrit is a very good at tatast. Very good word, which I'll try to explain but cannot be really translated. Tatastha means the one who is standing on the shore. On the shore and watching. That is the state in which you have to be. But as a result, you do not become a person who is not effective. You become extremely effective. If such people are there, you won't believe so many things can happen. Wars can stop. Peace can spread. People who are evil will be exposed. Now, because it's such an amas working out of Sahaja, Sahajogis should not in any way find themselves in conflict with each other. Still I find sometimes, and I'm amazed how people criticize other Sahajogis or other leaders while they themselves have problems. The reason is that once you start going beyond the mind, you automatically become introspective. And you start seeing what's wrong with me, this mind of mine now. So better stand before the mirror or can even close your eyes and see, now Mr. Mind, what are you doing? What are you up to? You face yourself. You stand out from yourself and see for yourself and ask the mind, what are you up to? That's the way. Once you are out of it, you can control it. Happy you are celebrating my birthday. I'm supposed to be quite old, though I don't think like that because I don't think. One has to be beyond the mind, to think about yourself all the time, or to think about
things which do not concern you sometimes, and just try to put your mind into a turmoil which is very dangerous these days. To stop your thought, first of all, I think in Sahaja Yoga I should stop reading anything. Because if you start reading, then what happens again? You start collecting thoughts from that book. I've seen many people whose mind is nothing but the books from others, or the words of others, or quotation of others. They are nowhere. You cannot find them. They are all lost people. He says so and that one says so. When I was writing this book, which you know that I have written down, they were saying, Mother, but Plato said like this and Rousseau said like that. I said, let them say whatever they wanted to. I'll say what I know. Why should I refer to them? I don't have to go to the libraries and read what Rousseau said, what Plato said, what I know, whatever I have witnessed in my life, I should write. Clearly, without thinking about what others have to say, what others have described. And also this mind has another big problem, that whatever is written down in black and white becomes Bible. Then whatever is done before is something great. Like now there is no Christ, there is no Muhammad, and there is no Abraham, there is no Krishna, there is no Ram today. But they will think of what Rama said, what Krishna said, then in Gita this he said, in Gita he has not said a word about Kundalini, so why Mother is talking about Kundalini? He might have said, can't say, who wrote Gita? Never Shri Krishna. Christ never wrote Bible, Quran was not written by Muhammad Sahib. So what they have said, why should you worry about that? Instead of that, you take the experience that everybody has said. That you have to be born again, everybody has said. That you have to go beyond the mind, also everyone has said. Why not do that and then see for yourself? But people like, and they are identified. Now if they are Christians who are coming to Sahaja Yoga, still they are happy if it is Christ. Very happy. If they are Hindus, should be Krishna or Rama maybe. If they are Muslims, it should be Muhammad Sahib, Fatima or so. Otherwise they can't get out of it. It is very difficult. Their mind is such that is so much made from childhood. You are told, you are a Muslim, you are a Muslim, you are a Christian, you are a Christian. So they believe it. Supposing you are born in some other religion, then what would have happened? You would have been something different. But this mind has been injected with the ideas which has gone into your head, and that's how you are so much without any freedom. You are tied down with these conditions. And that's what I find among Sahaja Yogis also a very big conditioning, that such and such thing is good or bad, they decide. You see for yourself. For example, if I talk on Guru Nanak, then the Sikhs will be very happy. But I talk on Christ, they won't be happy. I talked on Christ in Pune, so they said she's trying to convert everybody to Christianity. And when I was talking about Shri Krishna in London, they said she's making everybody a Hindu. So this identification that is coming to us when so intensely from, we should say it's like from the birth. All these ideas still are there and we are not free. That doesn't mean that you should not have faith in all of these people. They were all great, we have great respect for them and understand. But first you be free. You be free to know that. Your mind should be free. It should not be the injections that are put into your head that you cannot see the point. That's why they don't enjoy it. I've seen partly they enjoy, partly they don't. So to become a free person,
Because Sahaja Yoga is to give you complete freedom and also complete sense of freedom, so you respect the freedom of others. On the whole, you understand what freedom means. If that doesn't work out, then I would say that Sahaja Yoga is of no use. Because it should work out in such a manner that you should get rid of all these conditionings you have had. Now take the second enemy of ours is Mr. Ego, which is another headache and which works very fast. In many countries where already ego has been bloated. See these balloons. If they were bloated, all right, it's very easy to again make them big. But if they were never done that, then it's difficult. You have to pull it out, you have to put it to the pumps, otherwise it won't be bloated. Now this ego comes to us from different angles, and it actually will be surprised from the deformity of our chakra. For some people, money is very important. We must get money, some or other. If I don't get money, what's the use of being inside? Money is very important. We are living in a money-oriented world, no doubt. But I have told you that what's the use of having money that makes you a fool, which takes you, now see the countries which are very much money-oriented, who are supposed to be very rich. All the Scandinavian countries and Switzerland, whatever they might have done to get that money, doesn't matter. But they are people with money. People are committing suicide, young people are committing suicide, there's a competition going on. They are very unhappy. Why? That means money cannot bring happiness. Money, if that goes into your head also, then you cannot be as such. But the money is there just for you to use it to express your love. Now, you go to the shop, then you see something. This is very nice to be given to such and such person. You think like that. It's very sweet feeling you get then. You can give this to this one. He needs it very much. When your mind becomes the other way down, when it is thoughtlessly aware, then you will buy something that is joy, something artistic, something beautiful, something useful to that person. It will be a kind of a mind that is extremely full of generosity, enjoying its generosity. And all the time it will guide you to the projection of your attention to things by which you can give happiness to others. Small things, not necessarily expensive things. If you have money, better spend money in buying things that you can give to others, that you can express your love, your gratitude, your shraddha. It is very remarkable how people give money to these sadhus and babas in thousands and thousands and crores of, because I think in them it has come that to satisfy their shraddha they must give it, and so they give. And they have amassed so much money. They have no sense of it. They don't understand the value of that. To them it is nothing but money. So in the modern times I think the worst thing of ego is money. I have seen people who are very rich, supposed to be great business wallahs and something like that. They must meet me separately. We must come, mother, and see.
But they are useless people, absolutely useless. So they'll come and tell me, I'm having a loss in this, I'm having a loss in that, can you help us in this way or that? I just don't say anything to them. But they have said, Mother, we have recovered because of your blessing. Maybe. But it's stupid. Like Lao Tse described that you are going through the Yangtze River, it's beautiful. On the sides you see beautiful scenes. But you better be on the boat and reach the ocean. In the same way, supposing we have to catch a plane and we see something very nice on the road and get down there, how can we catch the plane? So these side effects of this mind are these, that we divert our attention to wrong things and waste our energy into it. Ultimately we are not happy. As you know that in general wants are not satiable. It's the love that you give and the love that you receive, which is not a love which is entangled into anything with any purpose, with any idea, but just to feel that love, pure love, within yourself and within others, is the greatest gift of the divine. All other things are useless, you'll find. You find it every day. Today you want to have a car, all right, have it. Then you want to have a house, have it. But you are not bothered about the car now, you want to have a house. Now you get the house, then you are not satisfied. Then you want to have something else and something else. So, which is that want, which is satisfying, is this pure love, genuine love, that you feel for the others and others feel for you. We have lots of conditionings of it. In our country especially, this Indian country, India so-called, you see, to dominate the wife is one of the greatest ego. I have seen people how they tortured women, their wives and the children of others just because they think I am a man. What do you get? You don't get any joy. You can never be joyous. If you try to dominate another person, you can never be joyous. Never be joyous. It's only through loving and affection and care that you can feel the joy. Because joy has these symptoms. Joy is not domination or demanding or asking. These are not the signs of a person who is joyous. A joyous person is that who just enjoys the caring, the loving, the gentle relationship. And this is another point where I've seen Indian men especially in the north, because of the same Muslim influence, whatever it is. In the north, the men are extremely dominating to their wife. And they insult the wife also. So now the women here have become extremely dominating also. Naturally, action has a reaction. This reaction itself is a wrong idea. And this reaction should be just dissolved into the feeling of pure love, the ocean of compassion. For example, I see on the streets of Delhi so many people begging, small children are there and all that. And now the feeling that I get is not of scolding them or getting angry with them. Maybe they are cheating, maybe anything there. After everybody is cheating, even those who have lots of money are cheating. So what is there if these poor people are cheating? Doesn't matter. But the compassion is built in within me like this, that let me somehow get a plot of land somewhere. Let me organize some sort of a place where all these people who are orphans can be put there and given
all this. All the help. And maybe from this pond of misery and poverty, you might get lots of lotuses coming up. But the feeling has to be collective. I feel that way. That will solve the problem of Delhi. But that doesn't mean that, like other social workers, like I have been connected with some social workers, and I was amazed that it was nothing but an ego pampering business. It has nothing to do with social work. Haphazard and nothing deep in their attention to look after these people. So with the great feeling of love and compassion, we can do it. We all can do it and can work it out. One of my desires is this: if it is a desire of you all, it will work out. It's very important that they are also human beings and we have to look after them. But for that, one should not think that I will be the treasurer, I'll be the president, and I'll be this. All these clergyships should go away from the mind itself. Otherwise you are not free. You are not free, like there's a nice joke about it. That somebody went to see the minister and the private secretary was there attending to the people. And he was getting very angry with them and all that. So some villagers said to me, "Who are you?" He said, "Don't you know I am PA?" "Ah, PA, oh. That means you are drunk." "All right, we have nothing to do." So a person with ego behaves like a person who has ego. Is a person like you can say a drunkard, or sometimes like a lunatic, really like a lunatic. Sometimes you have to meet them with a barge pole. I told you, some of these people who have got awards for peace, one has to talk to them with a barge pole, because they might just jump on you just like a cat, or could be like a leopard. You don't know how they are built up. I don't know how they got these awards for peace, but they have. So the peace is within us, and this peace has to be retained and introspected and seen. Are we peaceful or we are reacting? If we are reacting, then we are not peaceful. But people will say, yes, I am very peaceful, but I have to react. Then you are not peaceful. Just face yourself straight forward and see for yourself that if you are peaceful, then this peace will spread all over. It will help others. It gives them physical, mental, emotional and spiritual peace. So you people have a great responsibility of coming to surgery. It is not just a certificate or my badge that you are a surgeon. I would like also women to see to this point, because what I have seen about women is that they are mostly worried about their children, about their husbands, jobs and things like that. But they are not worried about others, about people who are around them. So they have to also take to Sahaja style of life, in which they expand their love, expand their attention to other people and see how they can please others. This situation used to be non-existent in the Western countries. I think they never knew that you should please somebody for no reward or for no purpose. If you give in a present to somebody, they'll say, "Oh, what do you want? You want coffee?" or immediately. To them, they cannot understand that somebody wants to express one's love. No, they can't. So this, now mind has changed, because Sahajogis are there and they are different people. But what I have seen before was so remarkable that they thought it was a weakness that they are giving us presents because they feel they are weak. All these ideas are changing in the West, and also we should not adopt their
stupid ideas that we can control people by giving them things or by giving them some sort of promises. We have actually to control ourselves, and that control can come. Do not allow your mind to control. That control is complete freedom. For example, now take an aeroplane which is perfectly built, which is absolutely all right, then only it can fly. In the same way, if you are a perfect Sahaja, then you will have no problems in dealing with any problem, with any circumstances, with any person also. There are many Sahajogis in the West I've seen, they said, Mother, we don't want to take any active work because we'll develop our ego. They think their balloon is already bloated out, and if they do some work, their ego will go up. So they say, we don't want to. It's not so. It's the love. You are working for love. Such an ocean of love is within you. How can you do without? And this has to work out at every level, whether it is your family, whether it is your city, whether it is your country or the whole world. This is the new generation we have to create of people who believe in love, which is truth. Which is truth. Without love, you cannot have truth. Because when you love somebody, you know everything about that person. In the same way, when you love your country, you know about everything about that. But first you must love. Why people are now having problems? Because they don't love their country. If you love your country, you will know what is the essence of your country, what is the problems of your country, what it is going through. And that intense feeling of oneness itself will work out, because after all you are connected to the divine. But with intensity you should feel for all these things that are really so destructive and troublesome in these modern times. I again want to thank you for celebrating this birthday and for all the sweetness you have showered upon me. You are just like these beautiful flowers for me, which are anxious all the time to make you happy, to please you. Just like that I find you before me. Beautiful flowers, fragrant with divinity. I hope you all will understand your own value and work it out. May God bless you. थोड़ी देर निःशब्द ध्यान में रहते हैं. Let's immerse ourselves in silent meditation.
श्री आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी। अब हम आरती की तैयारी करते हैं। लेट्स प्रिपेयर फॉर आरती। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारक कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना।
माँ कर दिया उजियारा। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री माताजी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी। श्री निर्मला देवी नमो
श्री कल की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः श्री निर्मला नमो नमः बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
दोनों हथेलियों को जोड़ के श्री माताजी को तहे दिल से प्रणाम करते हैं और आभार मानते हैं और प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माताजी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें जो निरानंद प्रदान कर हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसलिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा कर हमें सहज योग प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइएगा। हमारी सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार कर हमें आशीर्वादित करने की कृपा कीजिएगा श्री माताजी। Mother, by your divine grace and blessings, we surrender today's evening meditation at your holy lotus feet. For the infinite joy and the experience of flowing Parama Chaitanya on us, we are forever indebted to you and grateful to you. Such that Vishwa Nirmal Dharma gets established in the whole world, please make us your purest, loving instruments. Please accept all our prayers at your holy lotus feet, as we thank you again and again and offer you our salutations. Jai Shri Mataji. सामूहिक बंधन लेंगे. Let's have collective बंधन. वैश्विक शांति के लिए बंधन देते हैं. बायां हाथ श्री माताजी की ओर, दाहिना हाथ बाएं हाथ पर घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर बंधन देंगे और प्रार्थना करेंगे. परम पूज्य श्री माताजी, यूक्रेन और रशिया के सरहद पे जो तनाव का वातावरण है वह आपकी परम कृपा में जल्द ही सामान्य हो एवं वहाँ के नागरिकों को सुरक्षितता प्राप्त हो. बाएं हाथ की गर्मी को दाएं हाथ से निकाल देते हैं. यूक्रेन सहज योगा नेशनल काउंसिल की ओर से बंधन देने हेतु 3 प्रार्थनाएं. जय श्री माता जी। अब हम यूक्रेन के लिए बंधन देंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया करके यूक्रेन के कीव रीजन, चिर्निगव रीजन, सुमी रीजन, मरियोपल रीजन, ज़परोजिया रीजन पर जो रशिया आर्मी अपने रॉकेट से अटैक कर रही है तथा प्लेनों से जो अटैक कर रहे हैं, जिससे आम जनता, सिविलाइज लोग मारे जा रहे हैं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए तथा उन लोगों की रक्षा कीजिए। अब हम दूसरा बंधन देंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि रशिया और बेलारूस की आर्मियों के द्वारा जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है वो जल्द से जल्द थम जाए, जल्द से जल्द रुक जाए। अब हम तीसरा बंधन देंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि इस लड़ाई से यूक्रेन में रहने वाली माताएं, बहनें, बच्चे जो अपने लोगों से बिछड़ गए हैं, उन पे श्री गणेश जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तथा सबको श्री माता जी अपने प्यार के बंधन में बांधकर सबकी रक्षा करें। जय श्री माता जी।
जय श्री माताजी। ध्यान की इसी अवस्था में हम यूक्रेन में जो सहयोगी अपने घर में बंधक बने हैं युद्ध की स्थिति की वजह से, उन सबको बड़े हृदय से प्रेम भेजते हैं और इनके जीवन को सामान्य करने हेतु और जल्द से जल्द वहाँ के ध्यान केंद्र पुनर्स्थापित करने हेतु प्रतिदिन शुद्ध भाव से प्रार्थना करेंगे। श्री माताजी, we are sending our wholehearted love from India to Ukrainian collectivity. You are the protector. Mother, please protect yogis of Ukraine. Thank you, Shri Mataji. जय श्री माताजी। आप सबको विदित है 16 मार्च 2020 एग्जैक्टली 2 साल पहले पैंडेमिक की सिचुएशन जब भारत देश में अनाउंस हुई, उसके बाद सारे ध्यान केंद्र आहिस्ता आहिस्ता स्थगित हुए और इस कारण ऑनलाइन मेडिटेशन के माध्यम से जुड़ना पड़ा। प्रतिष्ठान से 16 मार्च की शाम को 2020 में यह ऑनलाइन मेडिटेशन का प्रसारण आरंभ हुआ और उसके बाद अब 2 साल तक ये सिलसिला कायम है। इस 2 साल के कठिन दौर के दरम्यान श्री माताजी ने अपने मातृछत्र के आशीर्वाद रूप में हम सभी सहयोगियों को इस माध्यम से बांध कर रखा। जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम प्रसारित हुए, इसकी कर्ता कर्विता श्री माताजी है और उन्हीं की परम कृपा से ये संभव हो पाया है। तो हमारी परम पावनी माँ को इस 2 साल के इस आशीर्वाद को धन्यवाद देने हेतु हम प्रतिष्ठान में बैठे हुए सभी सहयोगी और आप जो भी ऑनलाइन सहयोगी देख रहे, जोरदार हम तालियां बजाते हैं और श्री माता जी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जो भी सेवा बन सके प्रतिष्ठान में आकर या प्रतिष्ठान से दूर रहकर प्रदान की है। हम उन सहयोगियों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने अच्छे सुझाव भेजे, अपनी प्रार्थनाएं भेजी, सपोर्ट यहाँ पर जारी किया और इस कार्य के लिए धनराशि की भी आवश्यकता थी, वो भी भेजी। उन सभी सहयोगियों के लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हुए तालियां बजाते हैं। ये 2 साल के कठिन समय के बाद पुनः सामूहिक स्तर पर कार्यक्रम आरंभ हुए और हम जल्द ही श्री माता जी की 100वीं जन्म शताब्दी जब आरंभ होंगी, यानी श्री माता जी का 99th बर्थडे जो है ये मनाया जा रहा है। और जैसे आप सबको विदित है कि दोनों पूजाएं बड़े स्तर पर होगी। बर्थडे पूजा छिंदवाड़ा में भी और निर्मल धाम में भी होने जा रही है। तो आइए अनाउंसमेंट्स देखते हैं कल की। प्रतिष्ठान पुणे से जो ध्यान केंद्र चलता था सामूहिक स्तर पर, वो हर
शनिवार को होता था। तो ये शनिवार को शाम 6:30 बजे पुणे की सामूहिकता के लिए खुला है। इसमें हर सहयोगी सहभागी हो सकते हैं। कोविड नियम के अनुसार शनिवार को सामूहिक स्तर पर ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान से। और इस सप्ताह में 17 तारीख को हम होली मनाएंगे शाम 6:30 बजे। और इस शनिवार को यानी 19 तारीख है, तो प्रतिष्ठान में भी श्री माताजी की जन्म दिवस पूजा होगी। तो उस उपलक्ष्य में 19 तारीख को बाल शक्ति भी यहाँ पर फिजिकली परफॉर्म करेगी, भले ये कार्यक्रम हम लाइव नहीं दिखा पाएंगे। और जैसे ही थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी धनराशि से यहाँ पर जो भी कार्य हुआ है उसके लिए अनेक धन्यवाद है। जो भी सहयोगी रेगुलर समर्पण धनराशि भेजते वो pratishthanpunelivetoday इस वेबसाइट द्वारा बैंक अकाउंट में या फिर NEFT द्वारा या प्रतिष्ठान पुणे का जो ऐप है इसमें भी डोनेशंस की जो लिंक है उस माध्यम से आप जो भी आपसे बने वो आप दे सकते हैं। और इस धनराशि का सदुपयोग जो है नए साधकों को सहयोग सिखाने हेतु प्रचार प्रसार, प्रतिष्ठान के कैंपस की डेवलपमेंट और म्यूजियम विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अंतर्राष्ट्रीय जन्मदिवस पूजा महोत्सव की सूचना देखते हैं। तो ये 19 से 21 मार्च छिंदवाड़ा में होगा। 19 मार्च को हवन जो है इसका समय नोट कर ले, दोपहर 4 बजे है। तो जो भी सहयोगी वहाँ पर फिजिकली पहुँचेंगे तो सुबह के बजे ये हवन आपकी सुविधा के लिए 4 बजे किया है। बर्थडे पूजा जो है ये 21 मार्च को मनाई जाएगी। सुबह 10 बजे पूजा आरंभ होगी और 19 और 20 की शाम 7 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण होगा। 20 की देर रात में केक कटिंग का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो सहयोगी 21 मार्च की पूजा में यानी 1 डे रजिस्ट्रेशन हेतु उपस्थित रहना चाहते हैं, क्योंकि 3000 लोगों की व्यवस्था की गई थी, ऑलरेडी लगभग 4000 तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप सबको ज़रूर धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर 21 तारीख को आप आना चाहते हो तो 1 डे के लिए समर्पण राशि जो है ये 500 रुपये है। नागपुर से आप छिंदवाड़ा पहुंच सकते हैं या फिर सीधा छिंदवाड़ा भी आ सकते हैं। श्री माताजी का जन्म दिवस है, बहुत ही उत्साहवर्धक ये चीज़ होती है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो इस उपलक्ष्य में इस बार नारी जागृति महोत्सव के तहत 12 मार्च से 20 मार्च ऑनलाइन नए साधक जो महिलाएं उनके लिए ध्यान सत्र शुरू है। 5 बजे मराठी में होते हैं और 6 बजे हिंदी में होते हैं। इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही सुंदर ऐसा रिस्पांस मिल रहा है। इसके आज की जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देखते हैं, कल और आज की। जब भी इसका प्रसारण मराठी और हिंदी में शुरू हो जाता है, घर पर भी लोग अपने पड़ोसी नए साधकों को बुला के इस तरह से इन सत्रों का अपने लैपटॉप टीवी पे प्रसारण करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी पहले वाली प्रतिमा जहाँ पर आज लाइव फुट सोकिंग सिखाया था डॉक्टर लोगों ने, तो ये घर पर भी लोग लाइव फुट सोक कर रहे थे। तो ये बड़ा अनोखा श्री माता जी का आशीर्वाद है कि घर घर श्री माता जी पहुँचे हैं, घर घर आत्म साक्षात्कार पहुँचा है। ये सहयोगी बहनों ने जो कार्य आरंभ किया है उसके लिए हम इन सभी बहनें जो हैं बिल्कुल अभिनंदन के पात्र हैं। कल का जो विषय होगा मराठी में 5 बजे महिलाओं का आरोग्य पार्ट 2 है, इसमें भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स जानकारी देंगे। और हिंदी में होगा शाम 6 बजे। कहीं पर भी महिलाओं को सहयोग अगर आपको सिखाना है तो ज़रूर इन एपिसोड का आप उपयोग करें। लर्निंग सहयोग यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। साथ ही साथ nari.learningsahajoga.org ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर महिलाओं को सहयोग सिखाने हेतु सारी डिजिटल व्यवस्था है ताकि आपको सहयोग प्रचार में कोई दिक्कत ना आए। कल मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 4 बजे प्रसारित होगा। सुबह का ध्यान 5:30 बजे लाइव प्रसारित होगा।
शाम का ध्यान जो है ये 6:30 बजे 16 मार्च को है, 17 मार्च को होली होगी, 18 को भी 6:30 बजे प्रसारित होगा और 19, 20, 21 को छिंदवाड़ा से सारा लाइव प्रसारण है। 22 तारीख से याद रखें, फ्रॉम 22 मार्च ऑनवर्ड्स इवनिंग मेडिटेशन विल बी एट 7 PM। 22 मार्च से पुनः ध्यान की जो समय है ये 7 बजे शिफ्ट होगी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में इसे 6:30 बजे रखा गया था। अभी गर्मी के दिन शुरू है तो 7 बजे सबकी सुविधा के लिए ये सब लोगों के सुझाव है। लेकिन शनिवार का जो ध्यान है ये 6:30 बजे होगा, तो कृपया इसे नोट करें। चैट बॉक्स खुली है, आप यूक्रेन के लिए प्रे कर सकते हैं, या 2 साल में आपका भी जो घर पे बैठे जो अनुभव आपने लिया है ध्यान का, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। पुनः एक बार हम श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन 2 सालों में जो ऑनलाइन मेडिटेशन के माध्यम से विश्व की सामूहिकता को जोड़ के रखा। श्री माता जी आपको अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू सो मच। आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निमित्ताने सहजयोग ध्यान केंद्राद्वारे नारी जागृती महोत्सव 12 मार्च ते 20 मार्च दररोज संध्याकाळी मराठीमधून 5 वाजता आणि हिंदी भाषेमधून सायंकाळी 6 वाजता लर्निंग सहजयोग यूट्यूब चॅनलवर लाईव्ह कार्यक्रम। 9 दिवस 9 सत्र, प्रत्येक दिवशी एका विषयावर ज्ञान आणि सहजयोग ध्यानाचा प्रत्यक्ष अनुभव। महाराष्ट्रातील सर्व महिलांना सहृदय आमंत्रण। आजच रजिस्टर करा www.nari.learningsahajoga.org या वेबसाईटवर। संपर्कासाठी टोल फ्री क्रमांक 1800-2700-800। आत्मसाक्षात्कारी नारी, सक्षम नारी, आत्मसाक्षात्कारी नारी, आत्मनिर्भर नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सहजयोग ध्यान की ओर से 12 से 20 मार्च के दौरान नारी जागृति महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान हर रोज शाम 5 बजे मराठी भाषा में और शाम को 6 बजे हिंदी भाषा में लर्निंग सहजयोगा यूट्यूब चैनल पर लाइव सत्र प्रसारित होंगे। प्रत्येक दिन हम एक विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी के साथ साथ हम सहजयोग ध्यान का भी अनुभव प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम हेतु सभी महिलाओं को हम पूर्ण हृदय से आमंत्रित करते हैं। सभी महिलाओं से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन www.nari.learningsahajoga.org इस वेबसाइट पर करा लें या फिर संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-2700-800। आत्म साक्षात्कारी नारी, सक्षम नारी, आत्म साक्षात्कारी नारी, आत्मनिर्भर नारी।
में स्वागत करते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप आज की मातृवंदना की प्रस्तुति को आरंभ करें। जय श्री माता जी। आज की हमारी इस कार्यक्रम की सबसे पहली प्रस्तुति गणेश वंदना। जय जय तू अमेया, जय जय तू अजेया। सा
आदि शक्ति को नमन करते हुए अभी जय जय जग जननी ये भजन आपके सामने प्रस्तुत है। जय 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 जग जननी देवी जय चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण पधनी सा धनी सा रे नी सा रे ग सा रे ग म रे ग म प ग म प ध रा 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 प ग म प ध नि ध नि सा सा रे रे ध ध प प म म ग ग रे रे सा नि ध ध प प ध प ध सा नि सा पध सा नि सा पध सा नि वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण वर्म चर्म कर कृपाण शूल शैल धनुष बाण धरणी दलनी दानवदन रण करालिका पूतना
देवी भक्तिमुक्तिदायिनि भयहारिणि कालिका मङ्गलमुदसीति सदन पर्वशर्वरीशवदनि मङ्गलमुदसीति सदनि पर्वशर्वरीशवदनि तापतिमिरतरुणतरत् किरणमालिका 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 जय जय जगजननि देवी माता जय जय जगजननि देवी जय जय जगजननि देवी अभी जो